So we are on the last paragraph of our chapter, and before moving on to its explanation, let's discuss difficult word meanings. So first difficult word in this paragraph is entrepreneur. It means someone who makes money by starting their own business, especially when this involves seeing a new opportunity and taking risks. इसका मीनिंग होता है कारोबारी उर्दू में. Second word is tempted. It means to want something or to want to do something, यानी लालच में. Third word is fawn. It means to praise someone too much and give them a lot of attention that is not sincere in order to get a positive reaction, यानी चापलूसी. Fourth word is freeway. It means a toll-free highway. उर्दू में इसे कहेंगे तेज़ आमदो रफ्त के लिए मखसूस शाहराह. Let's move on to its explanation. इस पैराग्राफ में राइटर कहता है कि हाउ डू वी डिसाइड विच जॉब हैव ग्रेट वैल्यू, कि हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि फ़लाँ जॉब को ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी ज़्यादा वर्थ है और फ़लाँ जॉब की नहीं है. अगर कोई एक मॉल बनाता है या कोई भी शॉपिंग सेंटर बनाता है तो हम उसको कैसे उस इंसान को एंटरप्रेन्योर कह देते हैं, और अगर कोई फ्रीवेज बना रहा है, टॉल फ्री हाईवेज बना रहा है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्टर क्यों कहते हैं. ये क्या नोशन है, क्या बिलीफ है जिसकी बेसिस पे हम ये टाइटल्स असाइन कर रहे हैं. फिर राइटर कहता है आई हैव नो आंसर टू एनी ऑफ दिस. राइटर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसका कोई आंसर नहीं है उसके पास. बट वी माइट थिंक अबाउट द फिनोमिनन द नेक्स्ट टाइम वी आर टेम्प्टेड टू फोन ओवर सम स्ट्रेंजर. अगर हम अगली बारी बहुत ज़्यादा टेम्प्ट होकर लालच में आके किसी की चापलूसी करने को निकले जस्ट बिकॉज उसका रैंक या पोजीशन देख के कि सोसाइटी में उसको बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है, अगर रिस्पेक्ट मिल रही है तो ज़रूर उसका प्रोफेशन कोई जज का होगा. तो हमें इन चीज़ों को माइंड में रखना चाहिए कि हर जो प्रोफेशन है वो इक्वली रिस्पेक्टेबल है. और नेक्स्ट टाइम वी कैन कैच आवरसेल्व्स डिस्काउंट द पर्सनल वर्थ ऑफ द गार्बेज कलेक्टर. और अगर हम एक गार्बेज कलेक्टर देखते हैं या कचरा उठाने वाला देखते हैं तो हम उसको लुक डाउन अपॉन करें और उसकी एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन कर लें कि ये है क्या. अगेन जस्ट अ गार्बेज कलेक्टर. तो हमें इन दोनों प्रोफेशंस को इक्वली देखना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल आर ह्यूमन बींग्स. सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर. आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा. इंशाल्लाह विल बी मीटिंग विद सम न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. This is me, Maha, your English instructor, signing out.